everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So, you're watching the Robert Barron series by Poly Psychology, and if you haven't yet subscribed to my channel, then please consider subscribing it right away. Give this video a thumbs up and consider sharing it among your friends. So, talking about this video, we will be covering the topics of illusion and time perception, and with this, we will finish with our third chapter. And ये last video है third chapter का last part है. So इसके बाद इस video के बाद हम continue करेंगे chapter 4 के साथ. And so stay tuned and continue watching, continue studying. So let's begin. Illusions when perception fails. So illusions होता क्या है? Illusions are instances in which perception yields false interpretations of physical reality. Illusions are basically incorrect perceptions. तो illusions को आप किस तरीके से समझेंगे? Illusions होता है incorrect perceptions. Illusions are those perceptions जो कि actual में नहीं होते, हमें वो वैसा दिखाई देते हैं. मतलब एक जो भी आपको एक स्टिमुलस का जो परसेप्शन हो रहा है वो रियल नहीं होता, वो उसका मिसपरसेप्शन होता है. Illusion is basically incorrect perception. So instances in which perception they yield false interpretations of physical reality. Supposing something is in front of you, that comprises of the physical reality, क्योंकि physical world में आपको दिखाई दे रहा है, and when you're watching it and then when you're perceiving it, it will yield false interpretations. Whatever you interpret, that will be of फॉल्टी नेचर, वो फॉल्स होगा, गलत होगा, तो उसको हम इल्यूशंस कहते हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इल्यूशंस. फर्स्ट happens due to physical processes and second due to cognitive processes. So here we will study about cognitive processes कि कैसे cognitive processes की वजह से illusions आकर होता है. तो cognitive processes के अंडर में आते हैं illusions of size, for example like Muller-Lyle illusion, and second is illusions of shape और area, जैसे कि moon illusion में होता है. So moon illusion में basically क्या होता है? Now you are familiar with the most famous area illusion, which is the moon illusion. If you have ever wondered why the moon looks bigger at the horizon than at its highest point in the sky, then you are familiar with this type of illusion. तो अगर आपने इस चीज़ को नोटिस किया है कि मून जो है वो अपने हॉरिजॉन में जब प्लेस्ड रहता है वो हमें बिगर दिखाई देता है, और जब वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट में रहता है स्काई का, देन वी फाइंड दैट मून का साइज जो है वो छोटा हो गया है. लेकिन क्या वो छोटा होता है? वाई डज दिस इल्यूजन अकर? इन पार्ट बिकॉज व्हेन द मून इज नियर द हॉरिजन वी कैन सी दैट इट इज़ फार्दर अवे देन ट्रीज, हाउसेज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. When it is overhead at its zenith, such cues are lacking. Thus, the moon appears larger near the horizon because there are cues available that cause us to perceive that it is very far away. Once again, our tendency towards size constancy leads us astray. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम उससे रिलेट कर देते हैं, हमारा परसेप्शन रिलेट कर देता है कि जब वो मून हमें हॉरिजन में दिख रहा होता है तब हम वी कैन ऑल्सो सी द बिल्डिंग्स, वी कैन ऑल्सो सी द ट्रीज़, और हम उसे उस चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं और सोचते हैं कि उसका डिस्टेंस जो है वो लेस है. और जब वो जेनिथ में होता है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट में होता है, सो दोज क्यूज आर लैकिंग. उतने हाई में तो मतलब ट्रीज़ नहीं जाता या बिल्डिंग्स नहीं जाता, तो तब हमें उस वैसा परसेप्शन मिसपरसेप्शन हो जाता है कि उसका साइज जो है वो डिफ़र कर रहा है. सो नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ मिसअप्लाइड कॉन्स्टेंसी. व्हाट इज़ दैट? When looking at illusions, we interpret certain cues as suggesting that some paths are farther away than others. And in this scene, size constancy come into play. And also sometimes learning due to our past experiences. तो misapplied constancy बताता है कि जब हम किसी illusion को देखते हैं तो हमें ऐसा भी लगता है कि कुछ parts जो है वो ज़्यादा दूर में है या कुछ parts जो है वो कम डिस्टेंस में. तो ऐसा क्यों होता है? जबकि हो सकता है कि दोनों पिक्चर्स के जो डिस्टेंस है वो एक होते हैं, लेकिन हमें डिफ़र करता है. तो इसमें ये एक मिसअप्लाइड कॉन्स्टेंसी एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे कि साइज कॉन्स्टेंसी कम्स इनटू प्ले. नाउ सम की परसेप्चुअल प्रोसेसेस लाइक पैटर्न एंड डिस्टेंस
They suggest that perception is a practical process and it provides organisms with information essential to survival in normal habitat. Now, why did I say this? Because the specific nature of this information varies greatly with different species. तो हर एक species के अंदर में perception जो होता है वो different levels में होता है. For example, frogs, they must be able to detect small moving objects in order to feed on insect. तो उनके लिए ये चीज़ बहुत important है क्योंकि उनका food जो है वो insects होता है और अगर वो उस चीज़ को detect नहीं कर पाएंगे then they will not be able to survive. So उनके अंदर में जो है वो ये चीज़ का वो sensation है. While whereas porpoises, they require sensory input that enables them to navigate turbulent and murky ocean waters. So these are sea creatures. तो ये सारे जो mechanisms होते हैं body में वो survival के लिए होते हैं. Nonetheless, it is probably safe to say that virtually all living creatures, they need information concerning what's out there. हम सभी को ये परसेप्शन चाहिए, जो भी लिविंग क्रीचर्स हैं हम सभी को वर्ल्ड का अंडरस्टैंडिंग, वर्ल्ड का परसेप्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. व्हाट्स आउट देयर, हाउ फार अवे इट इज़, हमें कैसे पता चलेगा कितनी दूरी में है, क्या चीज़ है, वो कैसे डिटेक्ट करेंगे. तो जब हम इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाएंगे तब हम अपना नेक्स्ट एक्शन भी डिटरमिन कर पाएंगे. सो इन दैट केस इट इज़ very important. Humans are no exception to this general rule and we possess impressive perceptual skills in both the areas. So ये क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बींग्स के साथ साथ बाकी सारे लिविंग क्रीचर्स के भी अंदर में होता है ये चीज़. एंड ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमें समझने के लिए because we need to understand the world around us. So pattern recognition deals with what's out there. आपको कैसे पता चलेगा जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो चीज़ क्या है. मेरी कुछ ही दूरी में एक ऑब्जेक्ट मुझे नज़र आ रहा है या कोई भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है तो वो क्या चीज़ है. इसको समझाने के लिए दो तरीके के अप्रोच हैं. The first one is the bottom-up approach and the second is the top-down approach. Bottom-up approach explains our ability to recognize specific patterns that is based on simpler capacities to recognize and combine correctly lower level features of objects जैसा कि lines, edges, corners and angles. तो ये बॉटम अप अप्रोच में ये बताता है कि ये हमारा एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैटर्न्स. कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स को हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं जैसा कि एक अल्फ़ाबेट के लेटर्स को. हम अल्फ़ाबेट के लेटर्स को रिकॉग्नाइज करके वी आर एबल टू रीड द वर्ड एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन सिंपलर कैपेसिटीज टू रिकॉग्नाइज एंड कंबाइन करेक्टली द लोअर लेवल फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज द लाइन, एजेस, कॉर्नर्स. कैसे पता चलेगा कि द लेटर O is O? Because you are seeing it, you have learnt it how to write, and O is a circular kind of a letter in the alphabet, English alphabet, so you know that is O. So ये bottom up approach बताता है. Bottom up theory suggests that pattern recognition is constructed from simpler perceptual abilities through a series of discrete steps. In contrast, the second kind is the top-down approach. Now, this emphasizes the fact that our expectancies, they play a critical role in shaping our perception. Remember, our expectancies here in the top-down approach is playing a critical role in shaping our perception. We often proceed in accordance with what our past experience tells us to expect, and therefore we don't always analyze every feature of most stimuli we encounter. So, although top-down processing can be extremely efficient, it can also lead us astray. Nearly everyone has had the experience of rushing over to another person who appears to be an old friend only to realize he or she is actually a stranger. So in such cases, a tendency to process information quickly from the top down can indeed produce errors. Top down में basically top down approaches में our expectancies, they are playing a critical role in shaping our perceptions. इसका मतलब है कि हमारे माइंड में ऑलरेडी एक चीज़ का हाफ आइडिया या हाफ नॉलेज आप बोल सकते हो वो चीज़ होता है. तो हम क्या करते हैं कि वी टेंड टू यूज़ दैट थिंग. सपोजिंग समवन, यू आर लुकिंग एट समवन फ्रॉम बिहाइंड एंड यू थिंक कि ये तो मेरी फ्रेंड जैसे लग रही है, मेरी क्लासमेट जैसे लग रही है, लेट मी गो एंड टॉक टू हर. एंड व्हेन यू लाइक गो एंड कॉल हर, शी टर्न्स आउट टू बी सम अदर पर्सन. तो ऐसा क्यों हुआ?
बिकॉज योर ब्रेन इट ट्राई टू रिलेट द इंफॉर्मेशन. सपोजिंग उसने ऐसा कुछ हेयर स्टाइल किया होगा जिसकी वजह से आपको लगा कि वो आपकी फ्रेंड है. तो इसमें आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई कि आपकी एक्सपेक्टेंसी हो गई कि ये वही है और आपने एक स्ट्रेंजर को अपनी फ्रेंड की तरह परसीव कर लिया. सो ये होता है टॉप डाउन अप्रोच. आर एक्सपेक्टेंसीज आर प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल एंड इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल ऑल्सो, क्योंकि हम जनरलाइज भी कर देते हैं इस चीज़ की वजह से, हमें ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना. लेकिन ये हमें हमारे साथ मतलब कुछ ऐसा मिसपरसेप्शन भी करवा सकता है. नेक्स्ट इज डिस्टेंस परसेप्शन. हाउ फार अवे इज इट. यहाँ पे हम दो टाइप के क्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज मोनोकुलर क्यूज़ एंड सेकेंड इज बाइनोकुलर क्यूज़. Monocular cues are the cues to depth or distance provided by one eye. Monocular cues to depth or distance, they include the size cues, linear perspective, texture gradient, atmospheric perspective, overlap, height cues and motion parallax. तो ये सारी चीज़ें जो हैं monocular cues में आती हैं and they help us to determine the depth or distance that is being provided by our eyes. And binocular cues, they are the cues to depth or distance that resulting from the fact that we have two eyes. Monocular cues में ये one eye को अच्छी तरह से मतलब वर्क करने में हेल्प करता है. It helps us to recognize the depth and distance. And the binocular cues, they work for our both the eyes. Two eyes जब हमारे पास है तो वो उन दोनों को साथ में रख करके हमें हेल्प करता है for depth perception. And binocular cues for depth perception stem from two primary sources, the convergence and retinal disparity of our eyes. Next topic is time perception. Time perception in laboratory means judgment of duration, how much of time has elapsed. तो time perception क्या होता है? It is the duration, judgment of duration, कितना वक्त हुआ, कितना वक्त elapse हुआ. That is time perception. But the experience of time, it differs both from the physicist view and from the institutionalized ritual of clock time. In our consciousness, we have a persistent feeling of events receding into a past of non-existence. जो चीज़ हमारे पास्ट में चला गया वो चीज़ हमारे कॉन्शियसनेस में रहता है. कुछ ही देर पहले जो भी इवेंट्स हुआ आपके लाइफ में वो पास्ट में चला गया. Of the future as a nebulous void of possible existences to come. फ्यूचर का हमें नहीं पता, वो एक nebulous void है जिसके बारे में हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं. And now to which we grant a higher level of existence. We are, जब मैं now की बात कर रही हूँ तो present की बात कर रही हूँ. present में हम we are just granting the present moment a higher level of existence. Now, but in the physicist view, the dinosaurs, your birth, Christmas morning, and your deathbed all have the same level of existence as this very moment. तो physicist का view time perception को लेके कुछ और होता है, लेकिन it is only our consciousness that gives special importance to any place in the timescape. तो हम किस तरीके से टाइम को परसीव कर रहे हैं ये हमारा कॉन्शियसनेस में डिपेंड करता है. We know from experiments and everyday experiences that the speed of our internal clocks can be manipulated by the changes in body heat, differences in the time of stimuli to which we are responding, and by high adrenaline situations. So, for example, sounds are perceived as longer than flashes of light of the same actual duration, while adrenaline makes it seem as though time is slowing down. तो ऐसा अक्सर होता है. And time is very difficult to understand as it has been approached and appreciated in many ways. In everyday usage, there are many references to, like we use words like long time ago, once upon a time. तो इसका मतलब क्या है? लेकिन इसका मतलब हो सकता है कि कुछ टाइम पहले, कुछ वक्त पहले की बात मैं बताती हूँ आपको. तो हम वक्त को, टाइम को कैसा परसीव करते हैं? लेकिन लैब में जो है, लैब में इसे जजमेंट ऑफ ड्यूरेशन कहा गया है एंड हाउ मच ऑफ टाइम हैज़ elapsed. सो एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक क्यूज मेक्स time perception as something to be intrinsic or intuitive. इसका कुछ ऐसा मतलब specific cues नहीं रहता which provides an invariant basis for judgment. There is no specific organ for time perception or the judgment can never be
accurate about the time perception. This, however, is not true for other stimulus attributes where a specific sense organ is involved. Perceptual responses to other attributes are often made with the stimuli that are physically present, but response to duration of events can occur only after the events have run in their full course. तो हम एक टाइम को परसीव करने के लिए वो इवेंट को एंटायरली हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी हम उस टाइम के बारे में एक्सपीरियंस करके हम उसके बारे में बता पाएंगे, परसेप्शन कर पाएंगे टाइम के बारे में. तो इसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, इसी के लिए ये जजमेंटल है और सब्जेक्टिव है. ड्यू टू सब्जेक्टिव नेचर इट कैन नेवर बी एक्यूरेट. And the last topic is also there are certain factors that affect time perception, like organismic factors like concentration of time, mental condition, personality, motivation, stress. They tend to affect time perception. Time moves slowly for an inactive person जो lazy होते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, उनको लगता है कि दिन गुजरता ही नहीं है, एकदम स्लो जा रहा है. लेकिन busy people, they find that time passes fast. If a person is happy, there is underestimation of time, and if he is depressed and tired, उसको लगता है कि बहुत बहुत टाइम लग रहा है एक दिन को ख़त्म होने के लिए. तो ऐसा हमारे फीलिंग में, हमारे मेंटल कंडीशन पे, हमारे मोटिवेशन पे टाइम परसेप्शन डिपेंड करता है. एंड ऑल्सो ड्रग्स दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डोपामीन सच एज कोकेन, they seem to speed up the internal clock. So do moments of high stress. So there are certain factors that can also affect your time perception. And lastly, culture. Culture can shape our view of world. So perception and culture. I'm talking about the entire perception concept. इस चीज़ को भी culture affect करता है. Like, I would like to read this out. Individuals raised in diverse cultures can actually sense the world differently. For example, Marshall Siegel and his associates found that people who live in forests or in rural areas can sense crooked and slanted lines more accurately than can people who live in urban areas. In a sense, they showed susceptibility to horizontal vertical illusion than Westerners who showed greater susceptibility to multi-layer illusion. So this demonstrates that rural and urban groups, they sense the same event differently as a result of their diverse cultural learnings. Also, living in dense forest, the African subjects, they regularly experienced verticality. How? In the form of long trees, because they were living in dense forest, so they were habituated to see the long trees, the forest area, and they had developed a tendency to overestimate it. The Westerners who lived in an environment characterized by right angles, they developed a tendency to underestimate the length of lines characterized by enclosure. Example, arrowhead. So this conclusion has been confirmed in several studies कि कैसे दोनों ग्रुप्स के, कल्चरल डिफरेंट ग्रुप्स के, डिफरेंट एरियाज़ के, रूरल बैकग्राउंड, अर्बन बैकग्राउंड ग्रुप्स के लोग डिफ़र करते हैं परसेप्शन में. सो ये भी एक रीज़न है कि हमारा कल्चर इट अफेक्ट्स हाईली एंड इट हैज़ ऑल्सो गॉट अ रोल टू प्ले इन आर process of perception. So with this, we finally completed with the third chapter, and in our next video we will be starting with states of consciousness. It is a very interesting chapter and also very important chapter, I should say. So stay tuned and make sure to watch all the videos of mine, and if you're also interested to watch the videos of class 11th or 12th NCRT, you can check the description box. I have given the links. And don't forget to like this video, subscribe to my channel, and thank you for watching.